हेलो 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 हेलो। सो हेलो एवरीवन, आई होप मेरा अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज आप सबसे पहले यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। जूम से जो कनेक्टेड हैं, आई जस्ट वांट यू टू राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ माय ऑडियो वीडियो इज क्लियर, राइट। आपका ऑडियो और वीडियो, कुछ लोगों का तो वीडियो ही नहीं दिख रहा मुझे, बट ठीक है, जो जूम से कनेक्टेड है, बट आई रिक्वेस्ट दोज ऑफ कनेक्टेड, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। इट्स बेटर दैट मोर इंटरेक्टिव यू आर, बेटर इट इज फॉर यू गाइस। जितना इंटरेक्टिव आप रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, और शर्माने की कोई भी बात नहीं है, राइट। अब तो भाई पैसे की बात आ गई है, अब तो जॉब पैसा मिलने वाला है, राइट। अब दिस इज नेक्स्ट 1 वीक इज गोना बी वेरी मच इंटरेस्टिंग यार, ट्रस्ट मी। अगर जिन जिन को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, जस्ट राइट यस इन चैट बॉक्स। द पीपल दोज ऑफ कनेक्टेड फ्रॉम यूट्यूब लाइव, यूट्यूब वाली जनता, आप लिख नहीं रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, यस, हेलो हेलो हेलो, ओके, हेलो आयुष, हाय भरत, यस, ग्रेट 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 ग्रेट। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, राइट। इस पावन अवसर पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग मिली है, राइट। कुछ अच्छा ही लिखा होगा, राइट, बट ठीक है, नेवरदलेस आपको भी धन्यवाद। आप सभी को महाशिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि लिख सकते हैं आप चैट बॉक्स में, राइट। लॉट ऑफ पीपल हैव कनेक्टेड, आई थिंक मोर देन 250 300 पीपल, 300 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, राइट। काफी अच्छा लगता है मुझे, राइट। सभी को पहले महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आई थिंक काफी लोगों ने उपवास भी रखा होगा, राइट। कुछ लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग के लिए उपवास रखा होगा, कुछ लोगों ने महाशिवरात्रि के लिए उपवास रखा होगा, बट ठीक है। हर हर महादेव, यस, हर हर महादेव, राइट। ग्रेट 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 ग्रेट। So before we start the session, yaar, few things I wanted to clear from every one of you guys is number one, जो Zoom से connected है, if possible, let's become user friendly to the platforms, right? जो भी virtual platforms है, since I don't know आपने short listing देखा है कि नहीं, but मैंने काफी लोगों की short listing देखी है, ठीक है। तो वहां पे one thing was written is you need to give a interview on a virtual platform, ओके। तो आपको इन सब प्लेटफॉर्म्स की आदत डालना है। जो यूट्यूब लाइव से कनेक्टेड है, अगर आपको जूम पे आना है तो टेलीग्राम पर लिंक डला हुआ है, यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर, ठीक है। जो इशू फेस कर रहे हैं, आप जूम का अकाउंट बनाइए और फिर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सो ग्रेट। सो एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन इज दैट वी आर गोना बी डिस्कसिंग मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स। कैसे कंपनी सिलेक्ट करना, कितनी कंपनी सिलेक्ट करना, राइट, एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स आई नीड टू कीप इन माइंड व्हेनेवर आई एम गिविंग अ इंटरव्यू फॉर आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स ऑफ, ओके। Now, before we start the session, just wanted to know कितने लोगों ने अपनी shortlisting देख ली है। If you have seen, just write seen in a chat box. If you have not seen, you can write not seen in a chat box. At least मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा कितने लोगों ने अपनी shortlisting देख ली है। ओहो सर, रात से ये रिफ्रेश ही कर रहा था सर। एक बड़ा हक मेरा है सर आईसीआई की साइट को डाउन करने का। पीपल फ्रॉम यूट्यूब, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू जस्ट राइट कि कितने लोगों ने अपना आईसीआई का शॉर्टलिस्टिंग देख लिया है। अगर आपने देख लिया, जस्ट राइट सीन इन अ चैट बॉक्स। If you have not seen, just write not seen in the chat box. Nothing to worry, जिन्होंने नहीं देखा है, थोड़ी देर में आई थिंक द साइट इज गोना बी वर्किंग इन द सेम मैनर, फिर यू विल बी एबल टू सी योर शॉर्ट लिस्टिंग्स आउट, ओके, ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन, लुक्स लाइक कि ज्यादातर ऑडियंस ने देख ली है कि ये चीज है। सीन एंड देन लिस्ट डिसअपियर्ड, हो कोई बात नहीं शुभम, है ना। शुभम ने देखा और वैसे ही शायद लिस्ट डिसअपियर्ड हो गई। सीन बट नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नाउ बिफोर आई मूव इनटू दैट, आई आल्सो वांटेड टू नो कि आपको कितनी कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया है। कैन यू जस्ट मेंशन द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 इज आल्सो फाइन, ठीक है। 14 13 12 2 7 8 5, 1 तो होगी सभी केस में, ये तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, है ना। 6 10 8 7 6 3 1, राइट। 5 6 10 2 8 4 3 2 2 2 15, ओके ओके ओके, राइट, ओके। एंड जस्ट मेंशन द नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच यू हैव शॉर्टलिस्टेड, ओके, राइट। एक ऐसी कंपनी है जिस जो 1400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करने वाली है, एंड इफ आई मल्टीप्लाई बाय 10, राइट, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो भी कैंपस के लिए बैठ रहे हैं, राइट, मस्ट हैव गॉट एन शॉर्ट लिस्टिंग फ्रॉम दोज कंपनीज। बट ठीक है, नेवरदलेस जिन्हें नहीं मिली है, प्लीज नथिंग टू वरी, I'll tell you how you'll get some shortlisting out, how you'll also get few companies out, ठीक है। तो ICICI बैंक इज हायरिंग 1400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
तो ऑलमोस्ट सभी को आनी चाहिए उनके पोर्टल में। नहीं आई है, डोंट वरी, आई विल टेल यू कि सेकंड शॉर्टलिस्टिंग में कैसे फिल्टरिंग होगी, हाउ डज दिस गोना बी वर्किंग एंड व्हाट्स द एंटायर प्रोसीजर फॉर दिस कैंपस प्रिपरेशन। ओके, नाउ नंबर वन थिंग गाइस, एक चीज प्लीज दिल दिमाग जहां पे भी डालना है आपको, ये ग्राउंड रूल डाल लो, दिस next 2 weeks is going to be very very important. Okay, either in terms of accepting an offer or converting from stipend to salary, right, जो भी बोलो, you need to take the big decisions in your life. ठीक है, तो प्लीज गाइस दो तीन चीजें घर वालों से भी पूछ के रख लेना एंड ऑल्सो भी मेंटली इमोशनली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड कि व्हाट इज अ मिनिमम पैरामीटर और मिनिमम रेंज आई एम गोना बी एक्सेप्टिंग. Because I'll tell you from my past experience of 2 odd years, right? I have placed the people in the company you name. होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स यू विल बी गिवन एन ऑफर इन द मॉर्निंग और यू विल बी गिवन एन ऑफर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू. दे विल आस्क यू टू जॉइन ऑन अ इंस्टेंट बेसिस, एज एन दे विल आस्क यू टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय इवनिंग, बिकॉज उनको पूरी वैकेंसीज वहां पे क्लोज करनी होती है. ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते उनको कि मैं मम्मी से पूछ के कल बताऊंगी, राइट? यू कांट से देम. ओके, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ कि हाँ भाई अगर मैं इस कंपनी में सिलेक्ट हो गई, आई एम गोना बी ज्वाइनिंग देयर. ओके, सो विल बी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग. ब्लैकलिस्टिंग होता है नहीं होता है, 5,000 का पेनल्टी कब पे करना है, कितनी कंपनीज फर्स्ट शॉर्टलिस्ट में सिलेक्ट करूं, कितनी कंपनीज के लिए वेट करूं, राइट, विच ऑल कंपनीज आई शुड फोकस ऑन, राइट. एंड बिफोर वी स्टार्ट द सेशन ऑल्सो वांटेड टू नो दैट विच ऑल कंपनीज हैव शॉर्टलिस्टेड यू. ऐसी कौन सी 10-15 2-3 कंपनीज है आउट ऑफ विच वन कंपनी यू आर गोना बी वांटेड टू गो देयर. जस्ट यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स. एक कोई ऐसी एक कंपनी बताओ उसमें से जहां आपको जाना ही है, जो शॉर्टलिस्टिंग में आपको आई है. जस्ट मेंशन द नेम, जस्ट मेंशन द नेम. ओके, जिन्हें कोई भी कंपनीज नहीं आई, नथिंग टू वरी, राइट. अगेन द पोर्टल इज वर्किंग ऑन द सेम, राइट. आई वांट यू टू जस्ट पुट इट विच इज द वन कंपनी आउट ऑफ द 5 6 1 2 जो भी आपको लिस्टिंग आई है, विच कंपनी यू आर गोना बी टारगेटिंग फॉर. ओके, हीरो, जीटी, ईवाई, जीडीएस, आईसीआईसीआई बैंक, इकरा, एक्सेंचर, केपीएमजी ग्लोबल, नाइका, इंटरग्रुप ट्रस्ट, डेलॉयड, नॉट श्योर, हीरो मोटोकॉप. ओके, जो सबसे ज्यादा पैकेज देगी उसके लिए जाऊंगा. ओके, क्राउंटन, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट. बार्कलेस, एसबीआई कैपिटल मार्केट, इंडियन ऑयल, ओके, टीसीएस, नाइका, नॉट येट. ओके, गॉट इट, राइट. नाउ very very interesting part about the campus placement is that how to select the companies. सर ये बता दो, आप बहुत दिक्कत हो रही है, राइट. आई थिंक मेरे को सुबह से बैक टू बैक आई एम स्टार्टेड गेटिंग अ कॉल्स ऑफ द स्टूडेंट्स आउट कि सर बता दो विच कंपनी टू सेलेक्ट and what should I do, right? I got 5 companies, I got 6 companies, I got only 2 companies, sir, I got 0 companies out, right? Sir, site is not working, it's completely fine, but at least you have seen an idea of which all companies are there. Very very interesting parameter that on what basis you are going to be deciding the companies of selection. ठीक है, कि कौन सी कंपनी सिलेक्ट करने कैसे पता करना. ठीक है, तो द पीपल दोज हु हैव कनेक्टेड, इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर यू कैन डेफिनेटली नोट इट डाउन. इफ यू हैव डोंट हैव अ पेन एंड पेपर, एसएफएम की बुक के पीछे देखो पेजेस बचे हुए थे, थोड़े से जाओ लेके आ जाओ एसएफएम की बुक, राइट. यू कैन जस्ट कैरी दोस थिंग्स आउट. ओके, सो नंबर 1 parameter, I'll give you 30 seconds of time for the guys who are going to be carrying the pen and paper. Please pen and paper ले लो, because बाद में you will be like sir please repeat कर दो ना. हाँ मैं repeat करूंगा, but I just want you to write it down. ठीक है, ready? Yes. Okay. Now very very important, the first parameter basis of which you are going to be deciding is the job description. Okay. फिर सबसे ऊपर आएगा job description. It's not the salary guys. It's not the salary guys, please, because I'll tell you, right. I do understand जिन्हें queries है please आप wait कीजिए, we'll be covering every queries by the end of the session, but सबसे पहले on a top priority list it's the job description. You must be able to see on the roles and the responsibilities. जैसे आप कंपनी के नाम पे क्लिक करेंगे you'll be able to find what all job responsibilities or job roles which a company is going to be offering for. Okay, now there will be multiple type of companies. I'll tell you. First I'll divide into the big fours. Okay, big fours, big six, right? Number 1. Now in that you know that कौन से major roles they are going to be hiring. Either they are going to be hiring for stat audit, internal audit, taxation, DT, IDT, transfer pricing. These are the roles which a big four is generally going to be hiring for. So sorry if I missed any of the same, but yes, these are the major role which big four is going to be hiring for. This is one part. Second part is the industry. ठीक है, सबसे पहले आया big four, फिर आया industries.
Now industry, maybe there are multiple type of companies which are going to be there. Either it can be a banking company, either it can be a manufacturing company, or it can be related to the service industry. Okay, and others is always there, but yes. Now after this is done, you also need to see that, say for example, I'm going for a banking company. What are the job roles they are going to be offering me out? Simple example, ICICI Bank. Okay, सर से फॉर एग्जांपल मेरे को आईसीआईसीआई बैंक में देखा कि भाई आईसीआईसीआई बैंक का मेरे को शॉर्टलिस्टिंग आई है. जस्ट सी द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर विच दे आर गोना बी हायरिंग फॉर. As far as I know, they'll be hiring for a credit manager, relationship manager, and again 1 or 2 roles are there. So you need to see that कि हाँ ये job role के लिए hire करने वाले हैं. Number 1. Number 2, are you interested in those job roles? सर पता ही नहीं है क्या करता है credit manager, right? Nothing to worry, right? I've already uploaded lot of sessions for the ICICI Bank, which is there in my portal. आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्रेडिट मैनेजर बन के आपको करना क्या होगा. तो पहले तो सबसे पहले you need to understand what is the job role I'm going to be hired for. Number 1, because trust me, this is a role which you're going to be working for 1 year, 2 year down the line journey. ऐसा नहीं कि आपने एक दिन काम किया और हो गया. You're going to be working on this role. Okay, सबसे पहले job role के बेसिस पे आप डिसाइड करो. Number 1. Number 2, decide, is it a pure finance role or is it something which is a different from a finance role? Okay, कुछ लोगों को होगा कि नहीं यार मेरे को I only want to work in pure finance role. Pure finance role means you'll be part of accounting team, auditing team, MIS reporting team, right? This is a pure finance role. You'll be part of some AR team. AR is accounts receivable. You're a part of accounts payable team, है ना? ये होने वाला है. Or you'll be part of some other side of business, which is FP&A, consulting, है ना, business advisory, right? If you're going to be part of this, then see that कि उस role में जाना है या core finance role में जाना है. So based on that, you have now understood that this is what a job description is demanding for. Number 1. Okay, based on those job description, decide whether you want to do this job role. If yes, we'll move again to the next section. If no, we need to think. If no, we need to think. Okay, now coming to the second very interesting parameter, which is कौन सा है भाई सेकंड सबसे इंटरेस्टिंग पैरामीटर जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है सबको, है ना, which is on a top priority list of lot of people. Someone is saying sir CTC पैसा, right? So I'll tell you guys, trust me, CTC जो एक चीज है ना, it's a cost to company, not cost to the amount which you're gonna be getting for. Please guys, CTC के basis पे do not select the companies. Because if you're selecting a company based on CTC, please calculate what is the net amount which you're going to be getting in your hand. ठीक है? Few people just messaged me before कि sir off campus में तो sir Big Four is offering somewhere 8 or 8.5. Again, just giving an example, nothing related to anything. And in the campus placement, I can see they are offering 10. How this is possible? I don't know how many of you have seen this कि off campus में sir companies ज़्यादा offer कर रही हैं, off campus में कम offer कर रही हैं. Anyone of you have noticed this? If you have noticed this, just write yes in a chat box. If you have noticed this, just write yes in a chat box. YouTube se bhi you can write yes in a chat box if you can notice this out. Yes, I think a lot of you have noticed this. I'll tell you, in campus placements, the company also includes the variable pay. Okay, what does variable pay means? It's a pay based on your performance, which is given after 1 year completion. Okay, so we have a range of 10 to 15%. Okay, after you complete a 1 year with our organization, what I'll give you as a variable pay. Okay, so that part is also included in their salary. But if you see the what is the in-hand amount will be very less, somewhere around 60-70,000 only. But there are few other organizations which have already bifurcated the variable pay. आप ध्यान से आपका salary structure देखना. Some company have mentioned fixed salary, right, or basic salary, HRA and other allowances. Okay, some company have given directly the gross pay and net pay, and some company have just put it into other allowances. थोड़ा सा ध्यान से आपको जो भी companies which are shortlisted, you just go and see there. Okay, and please guys, please do not be in this trap stating that this company have mentioned 10 lakh ka package, I'll get a 10 lakh in my hand. What you do, you to take 10 lakh divided by 12, I'll get okay 83,333. No, that also includes a variable pay. ठीक है, और वेरिएबल पे कब मिलेगा? व्हेन यू आर गोना बी वर्किंग फॉर 1 ईयर. अब यहाँ तो भाई 6 महीने का श्योरिटी नहीं है आप लोगों का, और ठीक है, नेवरदलेस प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द नेट सैलरी यू आर गोना बी गेटिंग.
Okay, there might be cases that you might only get 58,000 in hand और वहां पे सैलरी काफी फैंसी लिखा हुआ है. ओके, तो प्लीज, आई नो एवरीवन इज गुड एट कैलकुलेटिंग द टैक्स, राइट? भैया बहुत डीटी में हमने टैक्स कैलकुलेट किया है, अब बारी आ रही है अपनी सैलरी का टैक्स निकालने का, तो इसमें हम गलती नहीं कर सकते. ठीक है, आई होप यू विल नॉट मेक दिस मिस्टेक, है ना? इफ यू आर नॉट गोना बी मेकिंग दिस मिस्टेक, तो आई वांट एवरीवन टू राइट आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक. यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स, है ना? अब समवन इज आस्किंग कि सर आप बता दो कितना किस में सीटीसी इन एंड आएगा. प्लीज गाइस आप निकाल लो यार, एवरीवन इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना? राइट, आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक. प्लीज गाइस, सबसे पहला टास्क जब भी आपको मिल रहा है, नेट कैलकुलेट कर लो कि कितना इन हैंड आ सकता है. बिकॉज लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैव सीन लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैव डन द सेम मिस्टेक. आफ्टर दे हैव जॉइंड दे वर लाइक सर कुछ मिल ही नहीं रहा है, राइट? सो अगेन, just please ensure that you'll not make this mistakes out. Please calculate the take home salary. So first thing, decide on the basis of a job description. Number 2, very very important, calculate the net home takes away salary. कितना घर पे लाने वाले हो, ठीक है? दूसरी चीज. Third thing, and now please do not get confused between a package of off campus and on campus, especially for the organizations which are hiring on campus and off campus, right? So generally off campus में you'll be finding a fixed salary which they are offering for, and on campus generally you will find the companies with a fixed plus variable. ठीक है, तो you might find कि campus में the companies are offering very high, but in off campus they are offering very low. It's not the case. Both are offering on the same line, but the difference is about a variable pay. Sir, what is a variable pay? Again, I'll explain. It's purely based on your performance after you're going to be completing 1 year down the journey, है ना? तो वो आपका होता है variable pay. Third part, which is again very very important, that a few of you might not be satisfied with the companies which you have got. Okay, few of you. ऐसा कोई है जो dissatisfied है? You can write I in a chat box if you're not if you're dissatisfied with the list of companies, right? सब मत लिख देना भाई. Right, some companies they have provided takeaway home, right, है ना? तो if I will, okay, yes, okay, I think few of them are कि यार ठीक है यार, I was expecting some good companies out. I was expecting कि सर मुझे भी ओला में मिल जाए सर. I was expecting Hero Motocop in my shortlisting out, right? But it's completely fine. Okay, it's completely fine. I'll tell you, companies have shortlisted you. Now it's your turn to shortlist the companies. ठीक है? It's company have done a first level of shortlisting. So say for example, few of them have got only one company or 2 companies or 3 companies out, right? How to select how many companies I should go for? How I should select how many companies I can go for? The best way is see and decide based on a job description, number 1. Number 2, take away salary. Number 3 parameter, which is there any substitute available to this companies, or can I apply this companies on through other ways? Okay, other ways, I hope you were able to get a hint of this. ठीक है? So is there any substitute or can I apply this companies through other ways? If the answer comes yes, then you can skip those companies out. If the answer comes no, then again you need to think कि हाँ इसमें apply कर दूं क्या? Okay, so you know there are substitute available to lot of top firms out, है ना? तो आप उनको ऑफ कैंपस अप्रोच कर सकते हो. अब शॉर्ट कौन सी कंपनीज को अप्रोच करना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ऑफ कैंपस, एंड यू जेन्युइनली वांट टू गेट देयर. मतलब आउट ऑफ द लिस्ट वॉट एवर यू हैव गॉट, आई थिंक माइट बी 5, 6, 2, राइट? डिसाइड विच 1 or 2 कंपनीज आर श्योर विच यू वांट टू गिव. पहले तो वो डिसाइड कर लो, ठीक है? After that is done, decide based on a job description which company you don't want to work there. Okay, and after that is done, also decide that whether the substitute available to this company is on off campus. Okay, so this is the major parameter based on which you are going to be selecting the companies out. Now sir, coming to the number of companies should I shortlist, right? Say for example a candidate has shortlist 4 companies, so he has got a 4 companies A, B, C and D, right? He has got 4 companies in a first shortlisting. Sir, how many companies I should select? It's up to you. अगर आपको चारों कंपनीज अच्छी लग रही है, if you like all the 4 companies, you can go for all the 4. But if you feel like नहीं यार, I like 3 companies or I like 2 good companies out, you can go for 2.
Sir, that means you are saying, should we wait for second shortlisting? You don't have an option. Right? अगर आपको पसंद ही नहीं है दो, right, तो you don't have an option. Okay. But if you like all the four, go for all four. And if you, sir, what if I go for three and if I don't get any shortlisting in a second shortlisting? Can possible. It's up to the companies whether they are going to be shortlisting your profile or not. ठीक है. And generally I recommend जिनको बहुत अच्छी companies है, if you've got all the good companies out, go for all four. If not, go for three. Simple answer. Still few people will be like, sir, दो के लिए जाता हूँ ना sir. How many companies I'll get in a second shortlisting, sir? बता दो, please बता दो sir. I don't know. It's up to the companies, they are going to be shortlisting you. I'm not going to be shortlisting you. है ना, मैं shortlist करता तो बातें कुछ और होती, but ठीक है, nevertheless, that is that. है ना, तो one thing, I hope you are clear with the how many companies I should select in the portal. Okay, now coming to the next and very interesting question is, sir, should we wait for a second shortlisting? Okay, again, it's very much contingent. It's very much contingent upon the companies which are going to be selecting you out. But mostly hota kya hai, how does it work, how does the second shortlisting works? Based on the first shortlisting, few people are going to be rejecting some companies out. Those companies are going to be shifting to your portal. वो आपके प्रोफाइल में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. ओके, तो जनरली जो आपके दोस्त को दिख रही है वो सिलेक्ट नहीं करेगा, वो आपके पास आ जाएगी. Okay, so this is how the portal is going to be working during a second shortlisting. Now, to the people, those who have not got any of the shortlisting or got very shortlisting, or the people those who are dissatisfied with this, okay, I'll say कि आप ज़्यादा अभी डिपेंडेंट मत रहो कि यार मेरे को कंपनीज बहुत अच्छी मिल जाएगी and stuff, right? Again, I want you to start also searching and hunting out the companies based on off campus. ठीक है? Because the passing percentage or the selection probability in a campus is somewhere around 25 to 30 or 50%. Okay, there might be cases that few people are going to be taking the jobs off campus. Okay, तो प्लीज मतलब आई विल बी वेरी रियलिस्टिक. कुछ लोग को लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, है ना, ये तो सच नहीं है, राइट? आई एम टेलिंग यू विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स. इफ यू वांट आई कैन शो यू द नंबर्स आल्सो. Okay, now coming to the next and very interested part is how to prepare. Okay, how to prepare for all these companies out. And also few people are asking, can we negotiate the salary during the interview, right? Which company is going to be offering which location, how to prepare for this, right? Everything we are going to be covered, right? But first of all, what I need to understand from all of you is that, so whichever company you're going to be shortlisting, right, either it is today or tomorrow, right, just ensure that whichever company you're going to be sitting for interview, you're going to be clearing those interviews out. ठीक है, बैठ रहे हैं तो भाई सिलेक्ट होके उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे. ये एटीट्यूड जिस दिन आ गया ना, ट्रस्ट मी, यू आर गोना बी बीटिंग ऑल द इंटरव्यूज आउट. ठीक है, अगर बैठ रहे हैं तो जी जान लगा देंगे. जैसे सीए फाइनल में, आई होप एवरीवन हैज पुट इन एफर्ट्स. कितने घंटे पढ़े थे? यू हैव स्टडीड इन सीए फाइनल. हाउ मेनी आवर्स यू हैव स्टडीड? जस्ट मेंशन इन चैट बॉक्स. 18 आवर्स, 16 आवर्स, 14 आवर्स, 25. ओ भाई, कैसे भाई 25 घंटे कहां से पढ़ लिए? दोस्त के बाटे का पढ़ लिए थे क्या? ये कौन है? अथर्व. Okay, right? So very important is that whichever the same level of efforts you need to put for this companies also. Okay, since the competition is tough, how I can say this? To hire one candidate, I'll select 10 candidates. Okay, to hire 10 candidates, I'll call 100 candidates, and the selection probability is 1 by 10. Okay, मैं डरा नहीं रहा हूं. आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स बिफोर द रिजल्ट्स और बिफोर द इंटरव्यू प्रिपरेशन. वी आर सिटिंग ऑन वेरी अर्ली डेट्स, है ना, टुडे इज 1st of March, but nevertheless here we are there to understand what all things are going to be there, and I genuinely want you to put an equal amount of efforts which you have put in during the time of your CA final studies. सर आर्टिकलशिप बची है, ठीक है यार, कब तक बहाने दोगे? ट्रस्ट मी गाइस, जहां पे 2000 का स्टाइपेंड मिलता था, आज 2 लाख का सैलरी की बात हो रही है. Okay, we are talking about 100x growth. ठीक है, and trust me, this is the time. If you don't put it, it's not going to be coming back. The next 2 weeks are going to be very, very, very important for you guys. Sir, I don't know about India's 115. What should I do? Start preparing. Sir, मैं prepare नहीं किया था सर CA final में, मुझे बहुत tough लगता था. Then also I need to prepare. The answer is yes, because the companies are going to be expecting from you guys. Okay.
ठीक है, मुझे नहीं पता कि किसका क्या चल रहा है. समवन इज सेइंग सर जीएमसीएस चल रहा है, समवन इज सेइंग सर आर्टिकलशिप चल रही है, राइट, समवन इज सेइंग शादी का रिश्ता चल रहा है. जो भी चल रहा है आपका मुझे नहीं पता भाई, बट दिस 2 weeks आर गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है. तो अगेन you need to convince your bosses if you want to leave, but this 2 months are very important for your life. 2 months, in fact 2 weeks I'll say. 2 weeks 3 weeks में आपका बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आप लेने वाले हो. Okay, now coming to the next and interesting part is regarding our preparation. But yes, है ना, before I go into this, also wanted to tell you this time we are going to be having a virtual interviews. I don't know how many of you have seen in the portal, but they have mentioned we are going to be giving a virtual interviews out. That means you are going to be practicing on the virtual interviews. Okay, कुछ लोगों को तो टेक्नोलॉजी में बहुत दिक्कत आती है. इवन आई हैव सीन दैट फ्यू पीपल वर फेसिंग एन इशू टू कनेक्ट थ्रू जूम. ठीक है, बट गाइस आई एम टेलिंग यू, प्लीज ये सब चीजों से है ना आप हैंडी हो जाओ. अभी बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, हेंस आई वाज नॉट एबल टू जॉइन द इंटरव्यू आउट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नाउ इज द टाइम यू आर गोना बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, बिकॉज द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. ठीक है, अगर आप अभी नहीं करोगे तो ऑल अदर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस. सो टाइम आ चुका है प्रिपरेशन का, वेयर वी आर गोना बी स्पीकिंग फॉर. एंड हेंस कमिंग फॉर द प्रिपरेशन फ्रंट, आई एम गोना बी टेलिंग यू दैट हाउ यू गोना बी प्रिपेयरिंग सम बेसिक स्टफ, राइट, which you're going to be doing is two important thing. Once you're going to be shortlisting or selecting any companies out, you need to do two things, especially for the ICAI campus. Number one is a research, and number two, you need to find some good mentors. Okay, दो चीजें आपको करनी पड़ेगी. सबसे पहला है रिसर्च, दूसरा है आपको मेंटर्स ढूंढने पड़ेंगे. ठीक है, मेंटर्स मतलब वो लोग जो उस कंपनी में ऑलरेडी इंटरव्यू क्रैक करके बैठे हुए हैं. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप उस जर्नी पे पहुंच जाओगे. दैट इज व्हाट आई मेंट. Okay, now coming to the first part, which is the preparation front, right? How you're going to be preparing for, what all things you're going to be doing a preparation for is, I hope my screen is visible. If my screen is visible from the people, those who are connected from a Zoom, can give a thumbs up. Thumbs up दे दो यार. कोई फ्रिज में चला गया thumbs up लाने के लिए? नहीं नहीं, you can give a thumbs up if my screen is visible, or you can write visible in a chat box. Okay, right. I think it's visible. People from YouTube दिख रहा है तो please thumbs up दिखा दो. Okay, right. आप like वाला thumbs up दबा दो. Okay, now coming to the research part, which is again very very important, which you're going to be doing once you're going to be getting a shortlisting for ICAI campus. Number one, research about the company, research about the interviewer, and research about the job role. Okay, अब कंपनी के बारे में क्या क्या रिसर्च करना है वो चीज के बारे में मैं बता रहा हूँ. How you're going to be doing this out. Number one, you need to do a research about the company's culture, company's goal, company's vision, company's mission. First thing. Second thing, find out the projects and the domains which a company is working into. What are the clients company is working into? What are the products the company is working into? After that is done, also find out the leadership. कौन सा leadership structure? What is the leadership structure? Who is a CFO? Who is a CFO? Right? And also find out the trajectory head. Once it is done, trust me, you'll be getting a lot of confidence. With this, you also need to read the financials of the company wherever you're going to be giving an interviews out. Okay, sir, financials कहाँ से मिलेंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के MCA पोर्टल, प्लीज जाइए, अकाउंट बनाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, you'll be able to download the financials. And after that is done, you are expected to read the financials in detail. पता होना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है सेल्स का. पता होना चाहिए कि the company has grown or not. Since preparation for industry is different, preparation for a big four are different, big six are different. Industry is going to be expecting that you have a good knowledge about the financials of the company also, but big fours are going to be expecting some different knowledge. They are going to be grilling you more on technical front. Industry is going to be expecting you to have a good knowledge about the companies, about the products. ठीक है, दोनों का प्रिपरेशन अलग अलग तरीके से करना पड़ता है. Now coming to the recent activities which are there, please do understand that कि कंपनीज के जो भी फाइनेंशियल्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, पी रेशियो क्या है, उस सेक्टर का पी रेशियो क्या चल रहा है, how does the industry is working out, and everything you should be aware about those companies. Number one, research about the company you need to do. Second thing, you need to do a detailed research about the interviewer. मतलब कि आपको इंटरव्यूअर को स्टॉक करना है. कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई. हाँ हाँ बिल्कुल कर लेंगे सर, बताओ, है ना. स्टॉक आई मीन्स यू नीड टू सी व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज, राइट. यू नीड टू सी फिर उसके अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट टाइप ऑफ पोस्ट ही राइट ऑन अ लिंक्डइन, राइट. एंड बेस्ड ऑन दैट it's going to be helping you to gauge the interview well. अगर सामने वाला पता होगा कि कैसा इंसान है, automatically you'll be able to give your interview in a better manner.
and hence you need to also research about the interviewer's trajectory, interviewer role, what a client he is working for, and some personal informations. ठीक है? And with this, very important, you need to do a detailed research about the relevant experience which is there. कि जो भी जॉब रोल है उसके बारे में you need to do a relevant research. अगर आपने ये 3 चीजों के बारे में रिसर्च कर लिया, your first task is done. Okay, again I'll summarize the discussion. Number 1, how to select the companies. These are some of the parameters based on which you need to see. Job description देखो, right? Again, one more major question: do we need to prepare the resume again? Sir, do we need to prepare a resume again? Already I have uploaded in the ICAI portal. The answer is, क्या बताया? What do you think? What the answer is? Yes or no? What do you think? Answer क्या होगा? Chat box में बताओ यार. Do I need to prepare a resume again, sir? See, I'll tell you, from day after tomorrow, you will be getting an email from the company either for induction, or for submitting your profile, or for submitting your details, or for submitting your photos, or for submitting your resume. Oh no, ये कैसे? सर फिर से मांगेंगे? हाँ फिर से मांगेंगे. ऐसे कैसे? मांगना इसलिए मांग रहे, right? So just be mentally, emotionally prepared. They might ask you, because last time also the same thing happened. Last time they didn't ask for a resume in the portal, but yes, companies do ask for the way what they want in their format. तो वो फिर से details collect करते हैं. They'll give you some portal access, they will give you some Google form links, and they'll ask you to put there. ठीक है? तो प्लीज ईमेल नोटिफिकेशन सब ऑन करके रखना. स्विगी जोमेटो की ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करो, और जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स है उनको सब्सक्राइब करो. ठीक है? नो ऑफेंस विद स्विगी जोमेटो यार, सो सॉरी अगर कोई स्विगी जोमेटो के फाउंडर्स देख रहे हैं तो, बट ठीक है. तो दैट इज वन थिंग. See the companies which you can't find on off campus, and package and difference I've already covered. ठीक है? So this is done. Research part is done. How you're going to be doing some research out, that is done. ठीक है? How many companies you should select, again I have covered this out. Should you wait for a second shortlisting? देखो, in second shortlisting, more or less on an average you get 1 or 2 companies. Average. कुछ की किस्मत बहुत अच्छी होती है, you might get 10 companies also, if your luck is very good. But on an average, as per my experience, I've seen 1 or 2 companies will be added on. No shortlisting to be done. है ना? अब जिनको shortlisting नहीं आई है, please wait for well till tomorrow or tonight. है ना? रात तक के रुको. There might be chances that lot of companies are going to be added to your list. Okay, sir. But if someone has said that, किसी ने मेरे दोस्त बोल रहा था कि if you don't select it today, you will not be able to select any companies tomorrow. भाई कल है last date, आज नहीं है. ठीक है? Tomorrow is the last date. Today is not a last date. Sir, what if I don't select one of the companies? I got A, B, C, and D as a 4 company. If I don't select D today, will I be able to select D company in a second shortlisting? The answer is no. एक बार किसी को रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो दोबारा थोड़ी आएगी पास में. बस वही वाली बात है ना? In a similar way, it's work in a campus placement. ठीक है? Wanted to go for other domain but have got some other companies out. Again, I have covered this. है ना? You need to decide कि आपको क्या करना है अभी, and you can again start hunting on this. Now, again, very interesting question, which is few of them have already troubled with me this question कि sir, I have selected 3 companies. मैंने decide कर लिया कि मुझे 3 companies select करनी है. ठीक है? But all those 3 companies are coming on the same day. All those 3 companies are coming on the same day. Now there is a probability that all 3 companies will schedule my interview on the same day. Right? Now there is a very high probability that all those 3 companies are going to be scheduling the interview on the same time. Ayyo, I haven't thought this. Okay, nahi, there is a very less probability. Number 1, because it's, again, you have a 12 hours of interview time, so 1 by 12 वहां पे probability हो गई. Okay, again, if there are 2 companies, it's 2 by 12. but ठीक है, मतलब that is the day when you're going to be deciding the priority, which company you need to give for a first, which company you need to give for a second. First thing. Second thing, बहुत बहुत important, this is from my learning, interviews काफी बार delay हो जाते हैं, बहुत बार डिले होते हैं, which I have seen. Your interview might be scheduled at 9, you might be getting for interview chance at 10 or 11, might be, not in every case, but कुछ बार होता है. जैसे ट्रेन लेट होती है ना, वैसे ही इंटरव्यूज भी लेट होते हैं. दैट मीन्स आई विल रिक्वेस्ट यू टू हैव 2 लैपटॉप्स. 2 लैपटॉप रखना अपने पास. From 1 laptop you need to connect 1 meeting, from second laptop you need to connect second meeting, and see कि कौन सा इंटरव्यू ज्यादा डिले चल रहा है. ठीक है? And based on which you can decide which interview you can give at what time. Sir, but I don't have a laptop, sir. I have only 1 laptop. Amazon 15 days return policy.
ठीक है, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, राइट? यू कैन यूज Amazon 15 days रिटर्न पॉलिसी, ठीक है? तो दैट इज वन थिंग विच यू कैन डू फॉर. So this is one thing which I have covered. Now, how to prepare research part, which I have already told you. Next part is very, very important, is a mentors, right? So those who have been part of our training workshop, we are going to be having a mega preparation week starting from 7th, 8th, 9th, and till your campus placement is there. Everyone is going to be putting into the specific company-wise groups with the mentors, and specific company-wise preparation we are going to be starting for. And also those who are again part of training workshop, so we have already covered the basic trainings with them, and we are going to be starting a specific company wise preparation training for our training workshop. So today is the last batch which is going to be starting, and GIR 21. Again, if you are interested, you can register for it. अगर नहीं है तो again you can think of it कि क्या करना है, but it's all about the investment, what I'll say. ठीक है, तो if you're interested, definitely you can register. I'll just post a link in the chat box, है ना? तो आज ही से चालू हो रहा है. देखो किस्मत, मतलब आज महाशिवरात्रि का एकदम आपको भगवान जी गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहे हैं, राइट? सो यू कैन यूज दिस लिंक टू रजिस्टर. आई जस्ट गिव अ सेकंड टू शेयर द लिंक इन द चैट बॉक्स. ठीक है, तो वी डू कवर एवरीथिंग देयर यार. जो भी प्रॉब्लम्स है, इनफैक्ट वी डू कवर एवरीथिंग इन वेरी डिटेल कि कैसे जाना है, क्या जाना है, राइट? आई गुड न्यूज टू शेयर विद Wipro GFL program. I don't know how many of you have heard about it. Company has shortlisted 8 candidates, out of which 6 candidates were from our GR training workshop. ठीक है, तो that is the level of training program which we have built, and that is the level of things which we are going to be ensuring कि preparation बहुत rigorous करते हैं. We do assign you a mentors, we do give you a feedback on a resume review, mock interviews, group discussion, PI and whatnot. I think a lot of people from our previous batches are connected in this session. So again, you can again connect with them if you need any sort of guidance and stuff. Okay, so I have posted a link in a chat box which you can use, and if you have any queries, again we'll be covering all the queries now. I think काफी लोगों को बहुत सारी questions है, right? We'll try to cover more of a specific query, specific in terms of general queries, not like कि sir मेरे को 4 companies आई है, बता दो कौन सी 3 select करूं. ठीक है, I told you the broad guidelines based on which you are going to be thinking. After that is done, what I want you to do, number one, do an analysis. After the analysis is done, please rethink ki are you going to be going on a right direction or not. Once that is done, again, if you have still any queries, you can post me on a Telegram. You have a December 21 Telegram group which is there. You can tag me out there. I'll be happy to help you out with that. ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप वहां पे मुझे टैग कर दो. I'll be happy to answer you guys. ठीक है, now what we are going to be doing is we are going to be opening the forum for a doubt session. So जिन को doubts है, right, it's easier and faster way to connect or cover all the doubts from a chat box, right? So जिन को भी doubts है, I'll just enable the chat box for our Zoom also. तो जिन को भी doubts है, I'll just request you to please keep your doubts ready in a chat box. First I'll cover some doubts from from our Zoom YouTube live, then I'll again move to the Zoom. ठीक है, तो अभी Zoom का मैंने चैट बॉक्स इसलिए बंद रखा है बिकॉज आप एक साथ बहुत सारे डाउट्स ऊपर चले जाएंगे, एंड हेंस आई फर्स्ट कवर द डाउट्स फ्रॉम YouTube लाइव. ऋषभ इज आस्किंग सर कुछ डिस्काउंट है, ड्रीम जॉब लगा लो, यू विल गेट द डिस्काउंट. सर इफ आई डोंट कंसेंट टू वन कंपनी कैन आई अप्लाई देम ऑफ कैंपस और विल दे कंसीडर दैट? हाँ, वन मोर मेजर क्वेश्चन समवन इज आस्किंग कि सर आई हैव अप्लाइड सम कंपनीज ऑन ऑफ कैंपस एंड आल्सो नाउ कंपनी हैव शॉर्टलिस्टेड मी ऑन कैंपस, व्हाट शुड आई डू? ए और बी, व्हिचएवर इज अर्लियर. पहली चीज इंपॉर्टेंट है, जॉब चाहिए, इंपॉर्टेंट है पैसा आपके लिए अभी एज ऑफ नाउ, व्हाट आई थिंक, राइट? ए और बी, व्हिचएवर इज अर्लियर. बट सर ऑफ कैंपस वाली कंपनी हैव नॉट कंफर्म टिल नाउ, पुश देम, नंबर 1, है ना? टुडे यू हैव अ डे, राइट? आज आप कंपनीज को पुश कर सकते हो, इवन इफ इट इज नॉट डन, राइट? Then what if my company have already rejected me on off campus, still they have shortlisted me on a campus? I don't know, ये बहुत रेयर हुआ होगा, but in case अगर किसी के साथ हुआ है, then you can again take a risk, but I will not recommend keep take a risk because once they are going to be going for a background screening, there might be chances that कि आपको फिर वो reject कर दे, might be, okay? But if you still want to get into those companies, then you can take a risk, okay? So I think that answers Shivangi your question. Sir, I have in each company there are different areas, for example, okay, stat audit, technology, risk assurance. So they'll give you a Google form, guys. जिनको ऐसे multiple rules का आया है ना, especially for the big fours and stuff, you'll be getting a Google form to upload your resume and select a role and domain. ठीक है, तो don't worry about it. Provide a dress code, right? Dress code is a formal. ठीक है, formal I means formal, complete formal. ऐसा नहीं कि नीचे half pant पहने, no, not.
ठीक है, अगेन आई विल शेयर द ड्रेस कोड पॉलिसी इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, तो वहां पे मैं शेयर कर दूंगा. Is it good to go for a offshore? Again, depending on lot of parameters, you can decide. है ना कि अगर so we'll have a different session on offshore वाला part. How to who should go for offshore? I have got shortlisted for this in company specific program. This company in company specific program. This companies are there. प्रीति आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सो सॉरी सर. अगर 6 कंपनीज आई है तो आपने 6 कंपनी सिलेक्ट कर ले. ओ नो भाई, मैक्सिमम यू कैन सिलेक्ट 4 कंपनीज गाइज. भाई भाई ऐसा ना करो. सो मैक्सिमम 4 कंपनीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज दैट. ठीक है, दो जो जूम से कनेक्टेड है, आई आल्सो वांट यू टू पुट योर डाउट्स इन अ चैट बॉक्स. आई विल बी हैप्पी टू कवर दोस डाउट्स प्लीज. सर ग्रोथ इन ईवाई जीडीएस विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दिस. नेक्स्ट सर, एक कंपनी 4 प्रोफाइल के लिए आई है, देन वी हैव टू सिलेक्ट 4 प्रोफाइल्स. नहीं, सो वन कंपनी हैव कम फॉर 4 प्रोफाइल्स, यू विल गिवन अ ऑप्शन टू सिलेक्ट वन कंपनी आउट, वन प्रोफाइल आउट. ठीक है, स्मॉल सेंटर्स की शॉर्टलिस्ट बाद में आएगी. द आंसर इज यस. If you don't get select in any of the companies, so nothing to worry, you can go for a small campus, and after that is done, you will be given a chance to choose some companies out in a second shortlisting. How to request for extension of joining date for a company of which I have offer letter? Company will not listen to this. Sir, small center वाली companies की details कब आएगी? Again, you have a timelines given there, that day you will be getting the same. Whether there will be, please एक ही बार doubts लिखना, बार बार same doubts मत लिखो which are covered. Please guide me on some clarity on big offshore. Offshore ka we'll have a detailed session on this. Nothing to worry about it. Job description is not visible on the shortlisted company of first round. What to do? 1 or 2 company might not have given, but once you click on the company name, they will be able to find the detailed shortlisting of detailed parameter for the job role. Next, how to get to know the profile for which I am not shortlisted. So very important, whenever you're going to be joining any of the organization, do confirm the job role which you're going to be hiring for. Okay. Sir, we aren't given an option for selecting one role, but they are asking the name in the ascending order. मोहित, मेरे को समझ में नहीं आया आपका क्वेरी. ऐसे ascending order में कैसे बोल सकते हैं? I didn't get this. Is there any chance to increase? हाँ, there might be chance that a few companies will be added by tonight. Might be chances. Consent submit नहीं हो रहा है one company की. ठीक है, wait करो अभी. I think the portal is having some glitch there, right? You can wait for this. अब मैं जूम के डाउट्स कवर करता हूँ. आई थिंक लॉट ऑफ डाउट्स आर देयर. आई विल कवर वन बाय वन प्लीज. नेक्स्ट सर, पैन इंडिया प्लांट लोकेशन फॉर वेदांता हीरो आईटीसी. यस, मतलब दे कैन पुट यू इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बट दे विल बट जस्ट आस्क यू व्हिच इज योर प्रेफरेबल लोकेशन. तो ये चीज होता है. ठीक है. नेक्स्ट सर, अगर वी आर श्योर अबाउट 2 कंपनीज, आई हैव गिवन अ कंसेंट. अभी नहीं, प्लीज गिव ऑल द कंसेंट्स टुगेदर. ऐसे पार्ट पार्ट में मत दो, बिकॉज अगेन वो समझ में नहीं आता कि कंसेंट दे दिया है कि नहीं. ठीक है, तो दैट इज दैट. ग्रेजुएट एनालिसिस कंपनी वाइज डाउट, अगेन विल हैव अ सेशन, है ना. मेगा प्रिपरेशन वीक इज अगेन फॉर द सेम, एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप इज अगेन फॉर द सेम. सर, मेरा ईवाई में ऑफ कैंपस सिलेक्ट हुआ है, कवर्ड दिस आउट. प्रोसीजर फॉर कंसेंट इन शॉर्टलिस्टिंग एंड व्हाट इज द स्क्रीन ऑफ रैंकिंग इन प्रेफरेंस. सो every company has a different parameters for shortlisting based on number of attempts, based on marks, based on rank, based on total score, right? Based on your articleship experience, based on your industrial experience, right? So this all are the parameters of shortlisting. Scene of ranking in a preference. Yes, ranking is also one of the parameter of shortlisting. 4% दोनों राउंड के लिए सेपरेट है क्या? नो, इट्स कंसोलिडेटेड भाई. टोटल में 4. ठीक है, टोटल में 4. आईसीआईसीआई बैंक की प्रिपरेशन कैसे करना है, ऑलरेडी अपलोडेड 2 वीडियोस इन आवर पोर्टल इन यूट्यूब चैनल, यू कैन चेक इट आउट. प्रोसीजर फॉर कंसेंट इन शॉर्ट लिस्टिंग, व्हाट इज द सीन ऑफ रैंकिंग इन प्रेफरेंस. रैंकिंग ऐसा कुछ नहीं होता. all 4 companies are going to be calling you for interview, then you need to decide. And ये भी होता है कि once you have given and cleared one of the interview, say for example मेरे को 4 कंपनी आई A, B, C and D. I have selected all those 4 company. I have given an interview of A and I have said that I will join this organization. Will I be allowed to give an interview of B? The answer is no. ठीक है, पहली को हाँ बोल दिया तो दूसरी को हाँ नहीं बोल सकते, नहीं तो फंस जाओगे. ठीक है. So again, ICAI team is going to be calling you, stating that कि please आप portal में accept करिए और give a confirmation to me. ठीक है. Once a company shortlist you, they give a list to the ICAI, and ICAI is going to be calling you again, stating that okay, you have selected in this company, you will not be allowed to sit for other interviews. ठीक है, तो that is that. Procedure for a consent in shortlisting, what's the scene? अरे हो गया भाई. ICICI बैंक again covered. सर, ये preference का क्या scene बता दो. What preference? I didn't get you, पीयूष. Just थोड़ा सा elaborate कर दो.
If we go for EY GDS, so what will be the chances of going abroad? So again, there are some chances, but not at very early stage, but after you come to some managerial position and stuff. Should we leave room for one company for a second round? Again, I have covered this, right? You can decide based on ki kaun si companies aaye, based on which you can decide. Procedure for consent and shortlisting. What is the scene of ranking covered? What's the scene of 5,000 penalty? Penalty कब लगती है? Once you have selected for any company, आपने अप्रूव उसको एग्री भी कर लिया कि मैं ज्वाइन करूंगा, एंड देन यू बैक आउट, देन यू आर सपोज टू पे 5,000 रुपीज पेनल्टी. ठीक है, आपने किसी को हाँ बोल दिया और फिर बाद में बोलो कि ना 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 मैं नहीं आऊंगा, राइट? दैट टाइम यू आर गोना बी गिविंग अ पेनल्टी ऑफ 5,000. ठीक है. प्रोसीजर फॉर कंसेंट इन शॉर्ट लिस्टिंग, ये तो हो गया भाई, कितनी बार लिखोगे सर? वेदर ऑफ कैंपस or campus is different. Off campus is something where you're going to be applying through your friends, through your CMON portal, right? All this is off campus, through companies career pages, right? This is what I call as off campus. Okay, so those who have not filled out the CMON campus placements, please guys fill out kar do, right? We are going to be having a aptitude test tomorrow for Anand Rathi. I think those who have filled out, unka first level of interviews kal hai, so please be prepared for it. You will be just getting an email from the organization in a while. ठीक है सर. लोकेशन क्या की होगी, है ना? सो अगेन प्लीज डू अंडरस्टैंड, से फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग फॉर अ बैंगलोर कैंपस. इज इट नेसेसरी दैट आई एम गोना बी गेटिंग अ जॉब इन अ बैंगलोर लोकेशन? द आंसर इज नो. प्लीज डू कंफर्म विद द कंपनीज आउट कि आप कौन से लोकेशन के लिए आपको हायर कर रहे हैं. So what all things need to be considered before you accept offer? Number 1 is location, number 2 is the job description, number 3 is the package. Okay, and other parameters are always there, like a notice period, what is the probation period, right? Are you going to be giving me the travel allowances, shifting allowances? ठीक है, वो सब चीजें you need to discuss about. ठीक है सर. पैन इंडिया लोकेशंस ये कवर्ड. प्रोसीजर टू गिविंग अ कंसेंट कवर्ड. सर स्मॉल सिटी के सिलेक्शन बाद में होंगे, राइट? यस, बाद में होंगे. How will I get to know about the interviewer? You'll get an email from the organizations which they are going to be shortlisting you. ठीक है. SAT एनालिस्ट, यार एक बार मेरे को इस रोल के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा. आई डोंट नो अबाउट दिस रोल. विल कंपनीज एक्सेप्ट गिविंग इंटरव्यू थ्रू मोबाइल फोन्स? ये कौन है भाई? प्रणय प्लीज यार. नहीं, आप लैपटॉप बुलाइए, दोस्त का लीजिए, कहीं से भी कीजिए. आई डोंट नो. इफ यू वांट आई कैन गिव यू अ लोन एट 20% इंटरेस्ट रेट. ठीक है, राइट? स्टूडेंट्स हु नो मी दे अंडरस्टैंड दिस जोक. ठीक है सर. ICICI बैंक, HDFC बैंक has shortlisted me if I work there for 1 year. What are the, again we'll have a detailed session on this. No company specific doubts please, है ना? If we select 4 in first round, can we select also? No, if you select 4 companies in the first round, गया, है ना? उसके बाद you will not be able to select any companies. Sir, can we use mobile? Not. Pan India location in Vedanta and Hero MotoCorp, please elaborate. Again, you need to understand the same with HR. Sir, take home salary is the hand salary in hand, मतलब net salary आप देखो after all the deduction and taxes, ये आपको in hand कितने आ रही है? That is what I meant. Okay, now I'll again cover the doubts from YouTube which is there. Sir, in case of PSU, companies are shortlisting in the ratio of 1:10 separately for each category. Ideally yes, ये चीज होना चाहिए, but again I'll say कि you don't worry about this, start focus on your preparation. How is Airtel International LLP? Again, detailed research about a company आप कीजिए, and again you try to connect with the mentors of those company out. Manufacturing depends upon the profile. Again company specific doubt. What is the interview procedure for the GAIL? Again, a company specific doubt. We'll have a detailed session on the same. Sir, can listed CTC and actual CTC be different? But there are chances, but you need to get confirmation from this. Manu, thank you. Manu Singh, I am enjoying the session. चलो बढ़िया है. Consent कब तक देना होगा? कल तक देना होगा. Sir, I have been shortlisted by Infosys. Want to give an interview preparations? Please training workshop में आ जाओ. Infosys के आपको mentor भी मिल जाएंगे. Can there be a system of preferences? New system of preferences? As of now, no. Consent कब तक देना होगा? Tomorrow. How long will be get to know that we are selected by the company? और company have already selected you. जैसे ही आप उनको approval दे दोगे, उन्होंने आपको offer दिया है. जैसे आपने law में पढ़ा होगा ना अभी, CPT में foundation में, you have got an offer. Now you need to accept it, है ना? After the acceptance is done, your interview is gonna be scheduled. ठीक है? Sir, can listed CTC हो गया? How to get profile of a company for which I am not shortlisted but want to apply off campus? No vacancies on a career pages. Reference friends, ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना है. ठीक है?
कंसेंट कब तक देना होगा? कल तक देना होगा. फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग वी हैव टू गिव अ कंसेंट बिफोर 12 PM. नो, टुमारो, कल लास्ट डेट है. बट कल के लिए रात तक वेट मत करना. ट्राई टू गिव इट टिल इवनिंग. ठीक है. 2 interviews on a same date. Again, I have covered this. Try to have a 2 laptops. That is something which is going to be helping you out. Sir, what is a pre-interview? What is pre-interview? I didn't get the question. सीना प्लीज थोड़ा सा अच्छे से लिख दो उसको. How to get to know for which profile the company I am shortlisted for? You need to get a confirmation with the HR and the hiring team. It's written PI, nothing mentioned about GD. Yes, very important. काफी सारी कंपनी सिर्फ PI लिखेगी, but they might call you for a group discussion on the same day. ठीक है. Many of the companies have written a PI, but they might call you for a technical or a psychometric test on 8th of March. I hope you remember the date, 8th of March. भाई हो सकता है, प्लीज मैं बोल रहा हूँ मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से प्रिपेयर रहो. ठीक है. तो दिस इज व्हाट हैपेंड. एंड अगेन आई डोंट वांट टू से द नेम ऑफ कंपनीज, बट व्हाट दे डिड वाज दे कॉल फॉर अ पीआई. सबको, सब कैंडिडेट को लगा कि पीआई हो रहा है. एंड ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट कि चलो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप डिस्कशन, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. दे हैव कॉल्ड ऑल द कैंडिडेट्स ऑन द सेम टाइम एंड दे स्टार्टेड विद द जीडी. सर ऐसे कैसे? ऐसा ही होता है भाई. ठीक है. तो प्लीज गाइस, प्लीज डू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच कैन हैपन. ठीक है. सर, ऑल द 4 interviews on a same date, how to manage? Again, I have covered this. You can rewind the session. It's written PI, nothing mentioned is GD. Yes, GD can take place. So this is good to select a profile which are pretty confident. Yes. ICICI mentioned flat gross pay. How to know the breakup? Again, which I have covered in ICICI का video. How to enroll for a workshop? Link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और you can be able to find a link which is pinned on a chat box. पिन की गई है लिंक. कंसेंट आफ्टर इंटरव्यू कब तक देना होगा? नहीं तो कंसेंट दे दिया तो अगेन इट्स डन. ओके सर, मेरा 3 शॉर्टलिस्टिंग आया है. ओके, विच शुड आई प्रेफर? अगेन डिसाइड बेस्ड ऑन द कंपनी विच यू आर गोना बी टारगेटिंग फॉर. Which company will ask for CV? I have no new and old CV. Please एक और CV बना लो अगर आपका पुराना बहुत पहले बनाया होगा तो, since there are chances that company are going to be asking for new CVs and stuff. हो गया हो गया हो गया. Sir, is a small center at Noida worth waiting? So again I'll say small centers का interviews काफी late है. Again आप इतना wait करोगे तो there are very rare chances. But again you can wait अगर आपको wait करना है तो, no doubt about it. But I'll personally say कि दे दो बिग सेंटर में भी. अगर यहाँ नहीं होता है तो स्मॉल सेंटर इज ऑफ कोर्स फॉर यू. सर, लिमिट ऑफ 4 कंपनीज इज फॉर बोथ बिग एंड स्मॉल कंबाइंड? द आंसर इज यस. सर, वेदर सीटीसी कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रूल्स? अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यू एंड हाउ यू स्पीक इन द इंटरव्यूज आउट. सर, सीटीसी को डिकोड कैसे करें? सीटीसी को कैसे डिकोड करें? लास्ट सेशन देखो आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स का, उसमें मैंने बताया हाउ टू डिकोड अ सीटीसी. Currently, I am working with ENY Stat Audit. I am looking for industry FP&A role, but not shortlisted by the company. Recently qualified. Shivam, off campus आप try कीजिए. Sir, whether company specific doubts will be addressed? The answer is yes. यहाँ पे नहीं, but training workshop में. ठीक है. Acceptance कब तक देना है? Tomorrow already covered. Please tell me about the program from 7th, 8th and 9th. Detail आ जाएगा 7th, 8th and 9th से जो मेगा प्रिपरेशन वीक आ रहा है. अगेन यू विल बी गेटिंग द डिटेल्स आर गोना बी इशूड टुमारो. ठीक है. करेंटली वर्किंग इन ईवाई स्टैट ऑडिट डन है ना. आई थिंक लेट्स मूव टू द डाउट ओवर जूम है ना. यूट्यूब से जिन जिन को डाउट्स है प्लीज आप डाउट्स लिखते जाइए. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू गोना बी प्रिपेयरिंग वेल, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग प्लेस्ड इनटू योर ड्रीम कंपनीज आउट. ठीक है. ओके 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 सर, 5,000 पेनल्टी आई हैव कवर्ड. How many levels of interview? Again, depending on number of companies, depending on companies. So, say for example, the company like ITC is going to be having a panel of 2 or 3, जहाँ पे 2 लोग बैठे रहेंगे as a interviewer, 1 person as a you as a interviewee. There might be cases that few company will have a 2 round, few company will have only 1 round, right? It's completely up to the company. ठीक है, but at max 3 in a campus placement. ठीक है, because they need to close the vacancy on a same day. Pan India location, Vedanta I have covered. Shall we use 4 companies now and wait for second round? Shall we use? नहीं तो maximum आप 4 select कर सकते हैं ना दोनों rounds में. Virtual interview होंगे, right? Procedure for consent in shortlisting. What's the scene of ranking? अरे already covered, कितनी बार लिखोगे? Pan India, Vedanta covered. No profile can be chosen in a single company. Jatin, I didn't get your doubt. Interviews virtual. Next.
ICICI Bank shortlisted for Bangalore. Is there a chance for changing of location? The answer is yes. Again, you need to connect with the HR on the same. We are very company specific doubt. Sir, CTC details are not visible mentioned as per the company policy. So you can calculate on an average based on a day, है ना? कौन से day पे आ रही है उसके basis पे you can calculate which is there in the brochure. Sir, small city के shortlist बाद में आएगी. The answer is yes. If there are multiple job roles, they might hire you for any of the job roles and they'll ask you for a confirmation. Sir, when will be the Wipro cohorts confirmation? Again, I think second is the last date of campus ka Wipro cohorts ka, and that is there. Will mentors help to prepare? The answer is yes. A lot of mentors are there who are working with Wipro, so don't worry about this. How to get to know about interviewer? Again, I've covered. Next. Sir, can you please share cases of small companies? Small companies ka we're going to be sharing the list जैसे ही आएगा, right? Mega preparation week is open to everyone. So it is open for GIR students and other students can be a part of it by making some nominal fees. That is there. Will we have multiple interviews for various profiles ranked in Big Four? Will we have multiple interviews around? No, they'll ask you for a specific profile. Okay. Capgemini GD says that will be assigned 2-week training. How would we get to know the role? So Capgemini का मैंने एक detail interview डाला हुआ है Know Your Dream Company. मेरे YouTube की playlist में check करिए. They will be able to get it out. ठीक है. तो that is the Pan India की location metro city होगी remote या remote. अच्छा. So again you need to confirm the location with the company यार. मतलब that is something which I can say. And now a lot of companies are demanding कि you are going to be joining the office. Please है ना कि work from home ज़्यादा demand मत करना since company has started asking कि we want you to join the office. Okay. Sir, what if the interview is in the process and second interview starts? How to respond at time? Again, you need to decide the priority at that time कि कौन सा ज़्यादा prior है. ठीक है. If I select a specific job role, example taxation, will I be able to switch to non-specific role, example statutory after the year? You can do this, but थोड़ा सा difficulty आएगा अभिषेक. That is what I'll say. ठीक है. तो वो difficulty आपको आएगा, but उसके लिए again we have some solution which I called as a capstone project, which I think a lot of you must have got who are part of training workshop. ठीक है. पैन इंडिया में लोकेशन मेट्रो सिटी है या रिमोट? ऑलरेडी कवर्ड. तो they'll ask you for a location. जहाँ पे भी पैन इंडिया लिखा है ना, they'll ask you for which location you are interested. Okay, someone is saying कि सैलरी में TDS काट के निकालूं या टैक्स काट के? भाई टैक्स काट के. ठीक है. Okay. I think a lot of company specific doubts. Pan India location covered. With what if the interview is in the process and the second interview starts covered? अरे सेम डाउट्स मत पूछिए बार बार. If rejected in campus, can we apply off campus? कोशिश कर दो. There is no downside to it. That is what I'll say. ठीक है. Please say something about CMONG training workshop. हाँ मैं बता देता हूँ guys. I think few of them have a lot of queries about the same. And मैं एक बार present करके बता देता हूँ what we are going to be covering there. Okay. So this is a training workshop GR batch number 21. We have completed till 20 batches. ठीक है. तो आज 21st बैच चालू हो रही है 1st of March से. Right. What do we cover here? सब कुछ cover करते हैं which is needed to crack and to go into the dream companies out. We do help with your resume review, cover letter, group discussion. Either it's case study based, non-case study based, personal interviews. Right. कि कैसे PI में बोलना, कैसे prepare करना. Right. Technical interviews based on a company wise, domain wise. Right. We'll give you some basic questions कि इस तरीके से at least आपको prepare करना है. After that is done, you will also tell you how to apply for off campus, how to use a LinkedIn to get placements for the companies out. After that is done, you will be given a specific mentors with whom you are going to be giving your GD and PI. ठीक है. जिनके साथ आप group discussion भी दोगे and PI होगा. ठीक है. तो you will be allocated a mentor. With this, we'll also allocate you a capstone project, which is a live industry assignments. जहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल कि आप इंटरनल ऑडिट में आर्टिकलशिप किया, नाउ यू वांट टू मूव टू द स्टैट ऑडिट, विल गिव यू लाइव असाइनमेंट ऑफ अ स्टैट ऑडिट बाय व्हिच यू विल बी इनकॉर्पोरेट दो स्किल्स इन योर सीवी एंड ऑटोमेटिकली आप वो सब चीजें अपने रिज्यूम में डाल सकते हो. तो वी हैव कैप्स्टोन प्रोजेक्ट फॉर ऑल द डोमेन्स, राइट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग, right, statutory audit, internal audit, taxation, DT, IDT, right, everything is there. Also we do give you a version test also, हर वो चीज देते हैं, aptitude test, version test. With this we have an exclusive placement program for our GI students which we called as a CAMPP. Okay, that is there. And with this again we will be having a special mega preparation week for all those guys, those who are going to be part of a workshop
from 7th 8th and 9th till your placements are done. ठीक है, तो 7 days बोलने का है, but we help you out to prepare till you get into placed into your dream companies out. And the best part is that if you're not satisfied, again you can take a refund on the last day. That is a best part about this. Is this the last CA Monk workshop? Last नहीं है भाई, ये तो आजीवन चलते रहेगा, but last for this season I'll say. ठीक है, तो last for this season which is there, but I'll recommend कि यार आज से चालू हो रहा है, this very less time, register कर लो, do not think much. ठीक है, link I have already shared in a chat box and already uploaded in the YouTube description link. Sir, ICAI में I have made a small spelling mistakes. अरे nothing to worry, अभी जो हो गया. Prepare, focus on this. Sir, do we have to fill CMP form separately for company coming to the campus? The answer is yes. Sir, interview के time पर रहे तो कैसे हैंडल करें? दो इंटरव्यू, अगेन हैव अ 2 laptop, that is what I have said. Sir, Big 4 articles का extra pay है, again depending on the salary negotiation and how you give the interviews. Let's suppose there are 4 companies. अरे please do not make the probability वाला cases guys. This is all are you're discussing a future event. Sir, चारों कंपनी का same day same time आ गया तो क्या करूंगा भाई? बहुत rare possibility है यार. Let's not discuss this. Let's discuss कि how we can prepare, right? How we can beat the interview of these companies which I'm targeting for. ठीक है, तो please do not worry guys, please do not worry, है ना? तो what are parameters I have told you, start working on the same, right? I do understand lot of doubts are there कि ये कंपनी सिलेक्ट करूँ कि नहीं करूँ, right? ये IOCL में जाना है कि नहीं जाना है तो but shortlist नहीं की, right? Please do not worry about it. It's a process, it's a journey for 2 odd weeks. Trust me, this journey is going to be teaching you a lot of things. But do remember, when you're going to be accepting any of the offers, have you make a cross check of few things. Job description satisfied, go. Aware about what is the net salary you're going to be getting in your bank account, aware about it, go. If you're going to be enjoying the interviewer and the discussion with HR and the manager out, go for it. ठीक है, please do not go for the stake of कि आपका friend जा रहा है या दोस्त जा रही है and I'll also follow him or her. No guys, ठीक है, it's your future, it's your career, you need to decide it wisely. ठीक है, प्लीज डू नॉट बी इन अ रेट रेस, है ना? फ्यू पीपल विल फील लाइक सर ये बैंक मेरे को 16 लाख का पैकेज दे रहा है. प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट कि टेक अवे इज डिफरेंट एंड द सिटी से विच इज मेंशन इज डिफरेंट. फ्यू कंपनीज विल इंक्लूड द ग्रेच्युटी आल्सो. ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा. सिंस वी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाउ इट्स द टाइम वेयर वी आर गोना बी कैलकुलेटिंग आवर टैक्स. ठीक है, तो प्लीज ये चीज ध्यान में रखिए. ओके सर, वेदर वन कंपनीज शुड गो फॉर, अरे नहीं यार प्लीज, आई डू अंडरस्टैंड आपको बहुत ज्यादा डाउट है कि सर आईसीआईसीआई बैंक में जाना कि नहीं जाना, इसमें जाना कि नहीं जाना, सर जेपी मॉर्गन में जाऊं कि नहीं जाऊं, राइट? डोंट वरी, विल हैव अ सेपरेट सेशन फॉर ईच ऑफ द कंपनीज फ्रॉम अ नेक्स्ट वीक इटसेल्फ. बट नाउ आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट आर द ब्रॉड पैरामीटर्स बेस्ड ऑन व्हिच यू कैन सिलेक्ट द कंपनीज आउट. ठीक है, अरे बाप रे, इतने सारे कंटिन्यूअसली डाउट, है ना? श्रेया तो रुक ही नहीं रही है. सर माय प्रोफाइल वाज क्वाइट गुड, आई did my article shift from Big 4, I did not get much shortlisting. Don't worry, wait for a second shortlist. ठीक है, सेकंड शॉर्टलिस्ट के आप वेट करो. आप आज महादेव के मंदिर जाइए, राइट? आज उन्हें बेलपत्ती वगैरह चढ़ाइए, सब फूल वूल चढ़ाइए. देखिए आपको शॉर्टलिस्टिंग आने का जरूर चांसेस बढ़ जाएंगे. दैट इज व्हाट आई कैन से एज ऑफ नाउ. ठीक है, 4 बजे वाला सेशन डिफरेंट है, राइट? दैट इज देयर. सर एक्सेंचर में जीडी है क्या? अगेन the companies might go for GD at a different phase. ठीक है, तो sir off campus offer from this company have got 10 companies shortlisting including Barclays in this. What to do? Decide based on what companies you're going to be interested for. ठीक है, so great यार, great. I think a lot of doubts are covered. Still lot of doubts are coming and I know this is gonna be n to the power infinity. चलते ही रहेगा. ठीक है, but nevertheless SR Bartley boy क्या है? SR Bartley boy EY, right? So it's gonna be continuously coming from your side. I do understand this is a time, this is a process. We are gonna be doing the research about the companies. But still, if you have any doubts, you have a December 21 discussion group, right? There you can tag me out by the name of CA Shivam and you can post the doubt. I'll be happy to answer there. ठीक है, अरे बस 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 बस, है ना? अभी थोड़ा सा सांस लो, राइट? है ना? तो आई जस्ट वांट कि यार, आई होप सभी ने सेशन को एंजॉय किया. थोड़ा बहुत सीख के जा रहे हो, इफ यू हैव एंजॉयड इट जस्ट राइट एंजॉय इन अ चैट बॉक्स. अगर सीख के जा रहे हो तो लिख दो यार, लिख दो. हम आपके लिए इतने एफर्ट्स ले रहे हैं. यू कैन राइट एंजॉयड, और इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन यू कैन राइट एंजॉयड इन अ चैट बॉक्स. दैट इज व्हाट इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी, राइट? इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन, यूट्यूब वाली जनता है, लाइक कर दो यार. आप ऐसे ना करो, आप लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, राइट?
So great, enjoyed the session. Lot of you have enjoyed the session. Lot of new learnings out with lot of folks. ठीक है. So great. I think that is something which I want you. Please take the decisions wisely. This is something which is gonna be deciding your future. अगले 2 हफ्ते लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ग्रूम योर सेल्फ वेल, है ना. अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से घूमो, है ना. मेंटली इमोशनली प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स. एंड इफ यू डू दिस, ट्रस्ट मी, यू आर गोना बी बीटिंग ऑल द इंटरव्यूज आउट. ठीक है. तो ग्रेट, है ना. थैंक्स ओम, आई थिंक थैंक्स नमन, कनन, है ना, करण, राइट. आई थिंक एवरीवन एंजॉयड फ्रॉम यूट्यूब. यार यूट्यूब वाली जनता, आप लाइक प्रेस कर दीजिए. दैट इज समथिंग व्हिच आल्सो मोटिवेट्स अस. थैंक्स शिवांगी. सो ग्रेट गाइज, विल वी कीप मीटिंग, है ना. हम रोज अल्टरनेट डेज कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ सेशंस आपके लिए रखें. आइदर इट इज कंपनी स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक और गाइडेंस स्पेसिफिक, राइट. इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी दिक्कत है, विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स आउट. ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर इंटरव्यूज, राइट. बढ़िया से इंटरव्यूज दीजिए और हमें बताइए कि कोई भी हेल्प चाहिए. विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दिस. ठीक है. ऑल द बेस्ट गाइज, और याद रखिए पार्टी पेंडिंग है. ठीक है. जॉब लगने के बाद पार्टी जरूर लूंगा मैं आप सबसे. ठीक है. धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक्स गाइज. बाय बाय. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. बाय बाय गाइज. थैंक यू.